there is a very important topic, that is your vector analysis. What is vector analysis? Because we should have to use the vector analysis in defining the different expressions. Here, you know that there are about lakhs of the physical quantity. According to the magnitude and direction, we can classify the physical quantity into two categories. One is vector, another is scalar. What is vector? Vector is those physical quantities कर देते हैं. Not only there is only one. Having both magnitude as well as direction. Those physical quantities which have both magnitude as well as directions. For example, displacement, velocity, force, not the energy. Energy नहीं, electric करंट भी नहीं, क्योंकि तुम इलेक्ट्रिक करंट में लगाते हो एरो का नेसेसन. करंट डेंसिटी जरूर है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, लेकिन फिर ग्रेविटेशन पोटेंशियल नहीं है. फिर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है, लेकिन ग्रेविटेशन पोटेंशियल नहीं है. स्केलर क्या है? दोज फिजिकल, इसमें भी कर दीजिए, क्वांटिटीज having only magnitude, example distance, speed, electric charge, electric current, even also 2, 3, 4, 5. These have the only magnitude. Time also, time have only magnitude, not the direction. Again, so how, which physical quantity is vector, which physical quantity is scalar, you should have to know. And as you have 2x plus 3y is equal to 6. This is algebraic expression. First of all, before knowing that in vector analysis, we should have to do the operation. Like the doctors have so many tools, seizure and everything, but the mathematician have also the tools, like the division, multiplication, addition, subtraction. These are the mathematical tools by which you can operate. First of all, how a vector can be represented? A vector can be represented by line segment. A vector can be represented by a line segment. Line segment. And length of the line is proportional to the magnitude of the vector, and the arrowhead gives the direction. Arrowhead gives the direction. This is the, if here is, and it is represented by the O is the initial, O is the tail, and A is the head. It is a vector Q. If there is another vector, this is another vector. Here is also the vector. What you are observing? What you are observing? Here, length of OA is same as the length of OB, but they are in opposite directions. Both magnitude of both the vector is same. Magnitude of both the vector is same, but their direction is just opposite. So they are opposite vectors. If there is another vector, this is parallel to the OA, and length of the OA is equal to OC, and it is vector Q, it is vector R. Again, OA is equal to OC, length of OA is equal to length of OC. Both the vector have same length, but same direction also. These vectors are known as equal vectors. There is also the unit vectors, the vector which have unit magnitude only. The types of vectors, you can write the definition of vectors. Yeah, just you remember it. I am not going to write on the board. How many types? First one, representation of a vector. First of all, we write here representation of a vector.
A vector is represented by a line segment. A vector is represented by a line segment, and length of the line is directly proportional to the magnitude of that vector, and direction gives the direction of that line segment gives the direction of the vector. If two vectors are equal in magnitude and direction, they are known as equal vectors. If two vectors are equal in magnitude but opposite in directions, they are known as opposite vectors. If a vector having unit magnitude is known as unity vectors. If vector have zero magnitude, then it is known as null vector or zero vectors. So later we will discuss all these things. Now the algebraic operation of the vectors. वेक्टर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं? Vector, like if you have the example, that question was asked in the several times in the different competitive examinations. If 10 force, there are two forces, 10 force and there are two forces, 10 Newton force and 7 Newton force. If both will act in same direction, the resultant should be the 17 Newton. If both will act in opposite direction, their resultant should be the 3 Newton. If they will act mutually perpendicular, their magnitude will be different. So we will discuss all these things, because vector, if you are adding the vector, if you are subtracting the vector, if you are multiplying the vector, you should have to keep their direction also in our mind. Their direction will affect on that. Next, now as we add the two quantities, like the 5 plus 3 is equal to 8, we can also add vectors. We can do the addition of two vectors or more vectors. But you should have to keep in mind that it is a vector, not only have the magnitude but also have the direction. If addition of two vectors, here is the one vector P, that is OA in this direction. We should have to find out the P plus Q. It is the OB. What is the way of adding the two vectors? What is the way of adding the two vectors? First of all, draw the vector OA. I have drawn the vector OA. There is a tail O, there is a head A. We should have to keep the vector, we should have to take the vector Q as we are keeping tail of the vector B at the head of the vector A. हमें वेक्टर B के टेल को वेक्टर A के हेड पे रखना है without changing the direction of the Q. Then you get a triangle. This is known as triangle of addition. It's known as triangle of addition. Then what's the resultant? OA is equal to OA and it's your OB. That's equal to I am not giving here that it is not this type of OB. So just we can keep it like that here. Any X, it is Y. It's your P, it's your Q, and it's your P plus Q. It is that here the two vector only. If you have a diagram like that, it is also the vector. If it here is also the vector, here the vector. If it is P, Q, R, S, T, O. If anybody asks you what is the resultant of these vectors, we can apply the triangle of additions. This is vector of P and Q. It is the resultant. P are the resultant of any P plus Q PQ plus QR, PQ plus QR is equal to PR. Again, this vector and this vector. Again, the case PR plus RS. PR plus RS
is how much? PS. Your PS. PS. Again this is the, again what is this? PT plus TO. PT plus TO. Here next is PT. Again I am writing here because I have written this one, PT plus TO is equal to how much? How much? It should be the PO. It should be the PO. PO is the resultant. PO is the resultant of all these vectors. That's if it is A, it is vector B, it is C, vector D, and it is E. If anyone write A plus B, give the vector notations. If anywhere it is left, you write. अगर कहीं छूट गया तुम अपने से लिख लो. P A plus B plus C plus D plus E क्या होगा? इस पांचों मिलके क्या होगा? PO होगा. क्या होगा? पांचों मिलके PO. That's your ABCD. That's your if OP is equal to F. अगर OP F है, OP क्या है हमारा? F है, तो OP F है तो PO क्या होगा? PO क्या होगा? माइनस F होगा. पांचों का रिजल्टेंट क्या हुआ हमारा? पांचों का रिजल्टेंट हुआ PO, दिस वन माइनस F. तो अगर कोई क्वेश्चन से पूछता है एंड आस्क यू, ये पांचों वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो करने के लिए कौन वेक्टर चाहिए? पांचों वेक्टर का रिजल्टेंट को जीरो करने के लिए हमें PO वेक्टर चाहिए, क्योंकि ये पांचों का रिजल्टेंट क्या होगा? OP होगा. और हम अगर PO वेक्टर यहां लगा देंगे, यानी कोई फोर्स लगा देंगे, तो ये जीरो हो जाएगा. मतलब तुम पांच वेक्टर को भी जोड़ दिया तुमने, देख सकते हो. यू शुड हैव टू अप्लाई द ट्रायंगल ऑफ एडिशन. अब जैसे तुम जानते हो अपने अलजेब्रा में 4 plus 3 इक्वल टू 3 plus 4, इसको तुम कहते हो कम्यूटेटिव लॉ. तो क्या A plus B हो चाहे B plus A हो, बोथ विल बी इक्वल. A plus B इक्वल टू B plus A. अगेन तुमने पढ़ा है कि 5 plus 7 plus 6, मान लो 7 plus 6 को अंदर रखते हैं, फिर A और B को साथ कर दिए और C को बाहर कर दिए. इस तरह का अगर तुम्हारे पास है तब भी ये ओबे होगा. तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? लॉ ऑफ एडिशन A plus B इक्वल टू B plus A plus इन ब्रैकेट B plus C इक्वल टू A plus B अंडर ब्रैकेट plus C, बोथ आर इक्वल. अब क्या हम लोग, जैसे कि हम लोग ये तो वेक्टर को जोड़े, हम क्या वेक्टर को आपस में घटा भी सकते हैं? डेफिनेटली, बिकॉज आई एम यूजिंग द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. You always remember it. What is the line? Subtraction is special law of addition. अगर सब्सट्रैक्शन ना भी होता तो मेरा काम चलता. अगर डिवीजन ना भी होता तो मल्टीप्लिकेशन से हम काम चला लेते, क्योंकि डिवीजन इज स्पेशल केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन इज स्पेशल केस ऑफ एडिशन. कोई कहता है 5 minus 3, मैं कहता हूं नो, 5 plus अंडर ब्रैकेट -3, just subtraction of two vectors. Start. Subtraction is special case of addition. Subtraction क्या होता है? कोई कहता है कि 5 minus 4, मैं कहता हूं नहीं, 5 plus अंडर ब्रैकेट -4, दैट्स इक्वल टू 1. ऐसे ही कोई कहे कि A plus B अंडर ब्रैकेट -B इक्वल टू A minus B. Here is case is same. That you will use here also the triangle of addition. We will use here the triangle of addition. What is triangle of addition? You know, you have studied this. Now here is, this is vector A, this is vector B. Again I am using this sentence, A plus minus B. It is B plus. So what is the B minus? I have told you opposite vector, you have to draw a opposite vector. Definition of opposite vector is that if two vectors are same in magnitude but opposite in direction, they are opposite vector or negative vectors. अगर B इस डायरेक्शन में, माइनस B क्या होगा? जस्ट उसके अपोजिट. तो मैंने अब माइनस B हो गया, तो A में हमको क्या करना है? माइनस B को जोड़ना है.
तो वी हैव ड्रॉ द वेक्टर ए को जोड़ दिया, वेक्टर ए को मैंने ड्रॉ किया, एंड वी टेक द वेक्टर माइनस बी, वी आर कीपिंग द वेक्टर माइनस बी को मैंने कहां लाया, इसका टेल पे रखा, इसके टेल पर इसका हेड रखा, सॉरी इसके हेड पर बी का टेल रखा, ए के हेड पर बी का टेल रखा और बी के हेड को ए के टेल से मिलाया। फिर से रिपीट करता हूं, क्या करता हूं, ए वेक्टर ड्रॉ किया, ए का ये टेल है, ये हेड है, इसके ए के हेड पर बी का क्या रखा हमने, टेल रखा, पूंछ रखा, और इसका हेड यहां आया और इसके टेल और इसके हेड को मिला दिया, तो ए माइनस बी, ये क्या हुआ, इट इज ए, इट इज माइनस बी, इट इज ए माइनस बी। बट वन डिफरेंस इज दैट एज यू हैव सीन, तूने देखा था, क्या देखा था, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, बट हियर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज a माइनस बी is not equal to b minus a, it is not equal, because definitely 4 minus 5 is equal to not equal to 5 minus 4. The case is same in any subtraction law of vectors, not obey the commutative law को obey नहीं करता है। तो just now if the case will always not the so simple, अगर इतना सिंपल केस हमारे पास नहीं होगा, if you have two vectors p and q, if you have two vectors p and q, an angle between them, you know, means angle between them is something theta. So what should be the resultant? Now we are going to the law of parallelogram. It is law of addition. What is the law of parallelogram? If you have two vectors and we can draw these two vectors as a adjacent side of a parallelogram, if two vectors can be drawn adjacent side of a parallelogram, then resultant of that two vector should be one of the diagonal of the parallelogram which originates from the common point of the P and Q, that is your R, and here we should have to derive how we can get, if R is a resultant of P and Q, P plus Q is equal to R, if angle between them is theta and diagonal makes an angle alpha with the first vector P, then we should have to derive a expression for that. Student, I have already told you about the law of parallelogram. If two vectors can be drawn as two adjacent side, this one and this one, of a parallelogram, then resultant of the two vector P and Q, resultant of the two vector will be that diagonal of the parallelogram which originates from the common point of the vectors. Here is the case. What the definition is telling that? What is the law? It is the law. Law is telling that if we have two vectors P and Q, if we have two vectors P and Q, if they are adjacent vector of a parallelogram, आसन्न भुजाएं, ठीक है, this is the P, this is the Q. If here what is here? OC is equal to AB. OC is equal to AB because it's the law of parallelogram. Both have the same direction. So if it is Q, definitely it is Q. It is OC is equal to Q. OC is equal to Q. Then AB is equal to Q. Definitely AB is also Q. If angle between them, angle between P and Q, if angle between P and Q is theta, angle theta है, तो that angle should be also BAM should be also the theta. तुम लोग पढ़े हो, it is a property of the parallel lines. ये एंगल अगर ये COA थीटा है तो BAM भी थीटा होगा. फ्रॉम द फिगर, क्या फिगर से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि OA प्लस AB इक्वल टू
OB, दैट्स योर R। ये तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ही हो गया हमारा कि OA, ये भूल जाओ इसको। तो क्या देख रहे हो, OA प्लस AB इक्वल टू हाउ मच, OA प्लस AB इक्वल टू हाउ मच, OB, and P plus Q equal to R definitely in triangle OBM, OBM, not here OBM, but triangle ABM, it is your ABM. In triangle ABM, it is the perpendicular, BM is the perpendicular, BM is perpendicular, and AM is the base. In whole physics, you should have to remember, if you have a triangle like that, it is your Q, it is angle your theta, then it is the base. Base should be always cos theta is equal to how much? Cos theta is equal to B by H. So it should be if it is A, B, C, मैं तुम्हें बता रहा हूँ पूरे फिजिक्स में याद रखना कि कोई ट्रायंगल तुम्हारे पास ABC है और AC क्या है, हाइपोटेनस है। अगर ये एंगल Q है, सॉरी ये Q है, आप भी कर सकते हो, कुछ भी जो तुम्हारी मर्जी हो कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, इस एक्यूट एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और रेस्ट क्या होता है, बेस होता है। तो कॉस थीटा को B बाय H, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये ऑलवेज बेस ऑलवेज क्या होगा, कॉस थीटा होगा, बेस ऑलवेज क्या होगा, कॉस थीटा होगा, और परपेंडिकुलर ऑलवेज क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो हमेशा याद रखना, आई एम टीचिंग द फिजिक्स नॉट द मैथमेटिक्स, आई एम यूजिंग द मैथमेटिक्स। तुमको थोड़ा सा ध्यान देना इस पे, मैंने बता दिया। नेक्स्ट, अब देखो तुम्हारे पास क्या है, अगर व्हाट इज दिस अल्फा, अल्फा इज एंगल, अल्फा एंगल है जो कि रिजल्टेंट OB, जो रिजल्टेंट OB यानी R मेक करता है, बनाता है किससे, पहले वाले वेक्टर से यानी P से। अल्फा इज एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट R एंड P। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस, आवर पर्पस इज कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन PQ एंड R विथ ऑल्सो विद द एंगल बिटवीन दैट, दोनों बीच के एंगल के बीच में P में, Q में और R में एक रिलेशन डेवलप करना है हमको। नाउ अगेन आई एम ट्रायंगल, बड़ा सा ट्रायंगल ले लो, देखो यहां फोकस करो, इन ट्रायंगल OBM, फोकस करो उस पर, OBM, पूरा ट्रायंगल हो गया। उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि OM क्या हो, OM क्या हो सकता है, OM हो सकता है OA प्लस AM, OA प्लस AM, it is nothing but it is your P plus Q cos theta। तो in triangle OBM, here also the case OM and also BM. What is the BM? BM is Q cos theta. No, I'm sorry, it is Q sin theta. In triangle OBM, OB square is equal to OM square plus BM square. OB is equal to R, and what is this? OM is how much? OM is equal to P plus Q cos theta का whole square, and it is your Q sin theta का whole square. This is under root. It is again P square plus Q square cos square theta, यहां से आ जाएगा ये P square sin square theta प्लस पहले इसको निकाल लेते हैं हम लोग, P स्क्वायर Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हुआ, A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ट्वाइस भी होता है ना, दैट्स हियर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos theta, whole thing is under root
अब तुम देख सकते हो कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये होता है, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, इट इज अंडर रूट and cosine square theta plus cos square 1, so it is your p square plus q square plus 2 p q cos theta. It's the final results. It is the final result. If you have a two vector p and q, it is not the vector, it is a scalar because हम तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो p और पूरा पर अंडर रूट होगा, तो r इक्वल टू क्या होगा, पहला वेक्टर का स्क्वायर नेक्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, दोनों 2 प्लस पी इंटू क्यू एंड कोसाइन वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर इफ अल्फा इज द एंगल, अल्फा क्या है तुम्हारा, एंगल है, अल्फा लिख सकते हैं हम लोग अल्फा के बारे में। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन पी एंड आर, तब टेन अल्फा क्या हो सकता है, तो P बाई बी पढ़े हो, P क्या है, P है ये क्या है, Q cos थीटा है, और ये क्या समझा है, OM क्या है, OM है P प्लस Q साइन थीटा, उल्टा हो गया। अल्फा इज एंगल बिटवीन P एंड R, दिस इज योर परपेंडिकुलर, सो इट इज द Q sin theta and it is your P plus Q cos theta. It is also these two are very important formula you got here. If you have a vector, any of the vector, if you have a vector P and Q, angle between them is theta, then the resultant will be the R is equal to P square plus Q square 2PQ cos theta root under, and if alpha is the angle between the resultant and the first vector P, then tan alpha is equal to Q sin theta by P plus Q cos theta. Here is we have the three case. If two vectors are parallel to each other, then theta is equal to 0. If they are opposite to each other, then theta is equal to 180. If the two vectors are perpendicular to each other, then theta is equal to 90. So you should have to find out all these three cases.